Assalamu alaikum viewers and a warm welcome to all of you on my YouTube channel. This is your host Muhammad Daniel Asif, back again with another educational and informative video with the purpose of enhancing your knowledge and understanding. Today I will be talking about essay writing, how to master it, its 4 types which I will explain to you with examples. And I hope that after watching this video, you will have a clear picture in your mind of how to write the perfect essay. If you are new to my channel, make sure to like, subscribe, share these videos and also press the bell icon so that you stay updated, and make sure to give me your feedback in the comment section. I look forward to your responses. So without any delay, let's delve into today's discussion. Essay. The word essay is derived from the French word essayer, which means to try or to attempt. Viewers, essay writing is the process of creating a structured piece of writing. ये बेसिकली वो फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है जहाँ पर राइटर जो है वो अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने आर्गूमेंट्स को ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक प्रेजेंट करता है. ऐसे एक कॉमन एकेडमिक रिक्वायरमेंट हैं और एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को और उसकी राइटिंग स्किल्स को इवेल्यूएट करने के लिए दीज आर यूज्ड. दे कैन ऑल्सो सर्व एज अ वे टू कम्युनिकेट वंस पर्सनल व्यूज़, एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स. ऐसे के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड देन अ कंक्लूजन, व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो. कुछ आपको डेफिनेशंस प्रोवाइड करूँ ऐसे की. फेमस इंग्लिश एसेइस्ट एल्डियस हक्सली डिफाइंस essay as a literary device for saying almost everything about almost anything. Then the Oxford Dictionary provides another version. It defines essay as a short piece of writing on a particular subject. So that was some introduction about essay. Now I will discuss with you how to master essay writing. Basically मैं वो steps आपको outline करने जा रहा हूँ. सबसे पहले understanding the topic. देखें viewers, पहला step यही है कि हमें फुली तौर पे grasp करना है कि what the essay prompt is asking. हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना है, टॉपिक को एनालाइज करना है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू सब क्वेश्चंस इफ नेसेसरी. यू कैन से सब हेडिंग्स और सब टॉपिक्स, ताकि हम पहले उस टॉपिक को समझें जिसके ऊपर हम ऐसे लिखने जा रहे हैं. अगर हम टॉपिक को ही नहीं समझ पाएंगे देन वी विल नेवर बी एबल टू प्रोड्यूस अ गुड एसे ऑन इट. रिसर्च. जब टॉपिक क्लियर हो गया तो उसके बाद वी हैव टू गेट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिबल रिसोर्सेज. इसका मतलब है कि हमें बुक्स से वो लेनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल्स, वी हैव टू कंसल्ट वेबसाइट्स और अदर मटेरियल्स. कीप नोट्स एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन टू एंश्योर दैट यू स्टे ऑन ट्रैक. देन क्रिएट एन आउटलाइन. बिफोर राइटिंग इट्स एसेंशियल टू क्रिएट अ रफ आउटलाइन ऑफ द एसे. आउटलाइन में वो की पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए फॉर इंट्रोडक्शन, फॉर बॉडी एंड कंक्लूजन. दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ लॉजिकल फ्लो. देखें, यू हैव टू फॉलो द लॉजिकल फ्लो. फर्स्ट देयर विल बी इंट्रोडक्शन में आप एक थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे. उसके बाद फिर आपका जो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे वो सबसे लेंथी पार्ट होगा आपके एसे का, जिसमें आप सारी क्रेडिबल एग्जांपल्स इंक्लूड करेंगे. ऑल द रेलेवेंट आपके जो आर्गूमेंट्स हैं, काउंटर आर्गूमेंट्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एसे यू आर राइटिंग, आप सारी इन्फॉर्मेशन जो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, डिटेल्स के साथ इंक्लूड करेंगे. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होगा, इट विल बेसिकली समराइज योर की फाइंडिंग्स. जो मेन सारे ऐसे में आपने बात की है वही बात जो है उसका एक तरह का खुलासा आप कंक्लूजन पैराग्राफ में पेश करेंगे. You have to make sure that you don't introduce anything new in the conclusion, so that the readers, after going through your essay at the final paragraph, suddenly become confused as to what sort of new information have you introduced in the conclusion paragraph. And writing the introduction. जो introduction है, it is very important that it hooks the reader's attention और thesis statement को और main argument of the essay को clearly state करे, because it sets the tone for what is to come. Developing the body. इस सेक्शन में आपको मेन पॉइंट्स को एक्सपेंड करना है यूजिंग एविडेंस एंड एग्जांपल्स. एवरी पैराग्राफ शुड कवर वन आइडिया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव कर रहे हैं तो ये नहीं कि जब आपका मर्जी दिल किया कभी 5-6 लाइन्स के बाद, कभी 10-12 लाइन्स के बाद आपने एक नया पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया. वन पैराग्राफ शुड कवर वन मेन आइडिया. और जब आपका एक आइडिया खत्म हो गया तो व्हेन यू हैव टू लॉजिकली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आइडिया, यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. यूज ट्रांजिशंस टू क्रिएट अ स्मूथ फ्लो बिटवीन पॉइंट्स. Then writing the conclusion, your main points of the essay you have to summarize here without introducing new ideas. The conclusion should restate the thesis and leave the reader with a strong final impression. Editing and proofreading. Finally, you have to review your essay
to check for any grammar errors, any spelling mistakes, or any punctuation that needs to be corrected. Make sure that the ideas are clearly articulated and the argument is coherent. Practice regularly, viewers. Like any other skill, essay writing also improves with practice. The more you write, the better you will become at organizing thoughts and developing arguments. Now let's discuss the 4 types of essays one by one with example. सबसे पहले narrative essay. Narrative essay basically they tell a story from a personal perspective. ये ज़्यादातर फोकस करता है on an experience or event और उसका impact क्या है on the writer. What you have to make sure in this kind of essay is that कि जो story है वो engaging हो and it should be vivid with descriptive language. Let me give you an example of a narrative essay. So मैंने इसको 3 parts में break किया है. पहले like आप ऐसे लिख रहे हैं on a memorable vacation you had. So introduction में आप topic को introduce कराएंगे, ठीक है, कि a memorable vacation I had was a trip to the serene mountains of Naran, Pakistan. It was my first time visiting a place so naturally breathtaking. Why I use 3 full stops at the end is because आप इसके आगे मज़ीद अपनी मर्जी के आइडियाज़ जो हैं वो लिख सकते हैं and that is how you can create an introduction paragraph. इसके आगे आप क्या लिख सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि हमारी जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई, हम डिफरेंट रोड्स से वैली से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे. जब when we reached there was cool breeze, there were crystal clear rivers and they made me forget the hustle and bustle of city life. So you can set that down in the introduction paragraph. Then body, this is where you will include all the details of your journey, that we decided to take up a hiking trip, Saiful Muluk Lake up here, that the journey was tough but the reward was worth it. When we reached the top, what happened? So you will include all these details in the body paragraph. Then finally conclusion. That vacation not only offered me peace and relaxation, but also created memories that I'll cherish forever. It was an unforgettable escape into nature. Because आप देखें कि इस conclusion में you will not include anything new. वही जो सारी बातें आप मेन ऐसे में करते आए हैं, उन्हीं को आप summarize करेंगे, ठीक है? So at the end, you are basically saying that it was a trip that was memorable and you created a lot of memories which you are going to cherish for the rest of your life. So this conclusion is very beneficial. Why? Because it not only restates your thesis statement or your main argument, but it also leaves the readers with a strong final impression. Then we have descriptive essay. Descriptive essay basically detailed description provide करते हैं of a person, place, object or experience, and they create a vivid picture in the reader's mind. They basically focus on sensory details, sight, sound, smell, touch and taste to immerse the reader in the description. अब इसकी जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी एन एसे विच डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ ए सनसेट. तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे? अ सनसेट इज़ वन ऑफ नेचर्स मोस्ट कैप्टिवेटिंग डिस्प्लेज ऑफ ब्यूटी. एज द सन बिगिंस इट्स डिसेंट, द स्काई ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ब्रेथ टेकिंग कैनवस ऑफ वाइब्रेंट कलर्स. इसके आगे आप फर्दर इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि ह्यूज ऑफ गोल्ड, ऑरेंज एंड पिंक ब्लेंड सीमलेसली, ठीक है ना, मेस्मराइजिंग ग्रेडियंट इज क्रिएटेड अक्रॉस द होराइजन, ठीक है. क्लाउड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, ठीक है, उनका ग्लो किस तरह का आता है. When you look up towards the sky, what kind of feeling do you get? Because descriptive essay, it is appealing to your senses. Then body paragraph, here you will include all the details of the description. The sun, now a glowing orb, casts long shadows. The world seems to pause in those fleeting moments as the day transitions into night. ठीक है. इसके अलावा आप सन की रेज जो हैं उनकी रिफ्लेक्शन कैसे पड़ती है, ठीक है, how they create extra layer of magic, how they turn the surface into a shimmering mirror. But you can keep on going, you can keep on including these details in your body paragraph. And when it comes to conclusion, as the sun finally sinks below the horizon, the colors slowly fade, leaving behind a deep, tranquil twilight. The beauty of a sunset is both peaceful and awe-inspiring, a reminder of nature's artistry. Obviously, you will see that the final line, the beauty of a sunset is both peaceful and awe-inspiring, a reminder of nature's artistry. It, closes the argument in a very fantastic way. It is a perfect conclusion. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि the purpose of a conclusion is to make sure that you restate your thesis statement or your main argument and also leave the reader with a strong final impression. Then we have expository essay. What are expository essays? These are the essays that present factual information about a topic in a clear and straightforward manner. ठीक है, ये explain करते हैं टॉपिक को, inform करते हैं, and they describe something without personal opinions. जिसमें आपकी कोई personal bias नहीं होती. You talk with logic, you talk with facts, you talk with reason. अब इसमें की टिप क्या है? यही जो मैंने आपको भी बताया कि you have to stick to facts, logical explanations, and you have to support them with credible evidences.
अब एग्जांपल मैं आपको जो देने जा रहा हूँ, इट इज़ बेसिकली एन एसे विच एक्सप्लेन्स द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। सो इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे कि जी रेगुलर एक्सरसाइज ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स, एक्सरसाइज हेल्प्स मेंटेन अ हेल्दी वेट, स्ट्रेंथन्स मसल्स एंड बोन्स एंड इंप्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। तो आपने टॉपिक की टोन सेट कर दिया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। देन बॉडी, हियर यू विल इंक्लूड ऑल द डिटेल्स, द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, आप लॉजिक्स इंक्लूड करेंगे, क्रेडिबल रिसोर्सेज साइट करेंगे यहाँ, ठीक है। It releases endorphins, often referred to as feel-good hormones, which can reduce stress, anxiety and depression. अब आप देखें यहाँ फैक्चुअल बात हो रही है, ये लॉजिक के साथ बात हो रही है, यहाँ पे कोई पर्सनल सब्जेक्टिव ओपिनियन या बायसनेस नहीं है कि जो राइटर है या जो नरेटर है वो कह रहा है कि मेरे ख्याल में फिजिकल हेल्थ में इस तरह हो सकती है या एक्सरसाइज का ये फ़ायदा हो सकता है। ही इज़ प्रोवाइडिंग फैक्ट्स, ही इज़ प्रोवाइडिंग एविडेंस, ही इज़ प्रोवाइडिंग लॉजिक्स। तो ये ही जो है ये मेन जो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर है ऑफ एन एक्सपोजिटरी एसे। Then in conclusion, overall regular exercise enhances both the body and mind, contributing to a healthier, more balanced lifestyle. अब आपने बहुत अच्छे तरीके से इन दो लाइंस के थ्रू सारी बात जो है उसको समेट लिया और एंडिंग, प्रॉपर एंडिंग जो है प्रोवाइड की ऑफ एन एक्सपोजिटरी एसे। Then last but not the least, argumentative essay. These essays basically aim to convince the reader of a particular point of view or stance. इसमें या आप किसी आर्गूमेंट के फॉर बात करते हो या आप उसके अगेंस्ट बात करते हो, और यू यूज़ क्रेडिबल सोर्सेज टू बैकअप योर आर्गूमेंट, और फिर आप काउंटर आर्गूमेंट्स को भी ड्रेस करते हो टू स्ट्रेंथन योर पोजीशन। यानी यू हैव टू ड्रेस बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। अगर आप किसी आर्गूमेंट के फेवर में बात कर रहे हो तो उस आर्गूमेंट के अगेंस्ट क्या बातें की जाती हैं या क्रिटिक्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वो भी इंट्रोड्यूस कराओगे ताकि आप फिर अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सको और वाजे कर सको कि वाई आई एम पिकिंग वन साइड। इंट्रोडक्शन, सो बेसिकली आई एम गोइंग टू हाईलाइट यू an argumentative essay on the topic of climate change being a critical issue. Climate change is undeniably a critical issue that demands immediate attention. The rapid increase in global temperatures driven by human activities, such as burning fossil fuels and deforestation, has already led to devastating consequences. So you have seen that an introductory tone has been set of this essay. Then in the body here, you will introduce all the arguments. You will also introduce the counter arguments. You will back up your side and you will also state what the क्रिटिक्स आर सेइंग। और ये आपने मेक श्योर करना है कि आप सेपरेट पैराग्राफ्स में, अब ये नहीं कि एक पैराग्राफ में अगर आर्गूमेंट खत्म हुआ तो उसी के अंदर ही काउंटर आर्गूमेंट शुरू हुए हैं और आगे जो रीडर्स हैं उनको समझ ही नहीं आप पाई कि जी ट्रांजिशन कब हुई है। तो आर्गूमेंट्स का अगर सेपरेट पैराग्राफ है तो काउंटर आर्गूमेंट सेपरेट पैराग्राफ से स्टार्ट होंगे। और अगर लाइक आपके 4-5 आर्गूमेंट्स है तो मेक श्योर कि आप 5 पैराग्राफ्स बनाएं, हर आर्गूमेंट के ऊपर एक पैराग्राफ है और उसके बाद काउंटर आर्गूमेंट्स के अलग पैराग्राफ हैं। तो इस तरह यू हैव टू डिवाइड योर एसे टू मेक श्योर दैट इट इज़ रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर योर व्यूअर्स, फॉर योर रीडर्स, फॉर योर ऑडियंस। अब बॉडी में आपने सारी डिटेल्स दे दी, आर्गूमेंट्स दे दिए, काउंटर आर्गूमेंट्स दे दिए कि जी क्लाइमेट चेंज क्यों एक इशू है, क्योंकि इट डिस्प्लेसेस मिलियंस ऑफ पीपल, और अगर हम इसके ऊपर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फूड और वाटर शॉर्टेजेस हो जाएंगी, और तमाम जो कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड है दे आर फेसिंग दिस स्ट्रेन एंड damages being caused there by these environmental disasters। फिर आप दूसरी साइड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने तो यहाँ कंटिन्यूसली सारों को लिख दिया, बट यू हैव टू इंक्लूड ऑल द आर्गूमेंट्स एंड द काउंटर आर्गूमेंट्स इन सेपरेट पैराग्राफ्स। तो ओपोनेंट्स क्या आर्गू करते हैं कि जी द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस इट इज़ टू हाई, तो बट यू आर सेइंग दैट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएक्शन विल बी फार मोर कॉस्टली। यानी आपने काउंटर आर्गूमेंट भी दिया कि क्रिटिक्स क्यों फेवर में नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के लिए स्टेप्स लिए जाएँ, और साथ आपने में ये भी बता दिया लेकिन जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप कुछ एक्शन नहीं लोगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली होंगे एज़ कम्पेयर टू वो कॉस्ट जो आप बचाना चाह रहे हो एक्शन ना लेके। तो आपने दोनों साइड्स के आर्गूमेंट जो है वो दे के अल्टीमेटली अपना पॉइंट जो है कि आप क्यों इस आर्गूमेंट के फॉर हक में बात कर रहे हो आपने उसको जस्टिफाई भी किया है। कंक्लूजन, investing in renewable energy, sustainable practices and global cooperation is essential for mitigating the effects of climate change. It is not just an environmental concern but a critical issue for the survival of future generations। और आपने आखिर में बात बड़ी खूबसूरती से समेटी है, कंक्लूजन दिया आपने, यहाँ पे कोई नई डिटेल्स, नए कोई आर्गूमेंट से काउंटर आर्गूमेंट्स नहीं इंक्लूड किए, बल्कि वही बात जो पूरे ऐसे में करते आए हो आपने उसी को अपने जो समराइज किया है, लिमिटेड सेंटेंसेज में सारी बात को ख़त्म किया, अपने ऐसे को प्रॉपर एक सूटेबल एंडिंग प्रोवाइड किया। तो व्यूअर्स अगर हम कंक्लूड करें अबाउट दिस वीडियो कि हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग, हाउ टू राइट द परफेक्ट ऐसे, तो ये कुछ स्टेप्स हैं विच यू नीड टू फॉलो। सबसे पहले योर ऐसे शुड हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट टू गाइड द ऐसे, अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका जो मेन आर्गूमेंट है उसमें जान नहीं है, उसमें वजन नहीं है, देन यू विल नेवर बी एबल टू राइट अ कन्विंसिंग ऐसे।
फिर सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है ऐसे में, यू हैव टू बैक देम अप विद एविडेंस एंड एग्जांपल्स, ये इंक्लूड करनी बहुत ज़रूरी है, एंड यू विल इंक्लूड ऑल दीज इन योर बॉडी पैराग्राफ्स। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग फॉर क्लैरिटी एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, बहुत ज़रूरी है कि योर ऐसे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी ग्रामेटिकल एरर्स, एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, एनी पंक्चुएशन मिस्टेक्स। Make sure to proofread it and edit it and undo the wrong things, and make sure that you change everything and make sure that it is perfect before you release it or publish it or it goes into the hands of the readers. Consistent tone and style throughout the essay. You have to follow the same tone and style. ऐसा नहीं है कि आप ऐसे के शुरू में फॉर्मल है तो आखिर में इनफॉर्मल हो गए, या कहीं पर आप सेकंड पर्सन में बात कर रहे हैं, किसी पैराग्राफ में अपने थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देने लग पड़े हैं, आखिरी पैराग्राफ में एकदम आप फर्स्ट पर्सन पे स्विच हो गए हैं। यू हैव टू फॉलो द सेम टोन एंड स्टाइल थ्रू आउट द एसे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्यूअर्स, बात वही है कि प्रैक्टिसिंग रेगुलरली will help you improve your essay writing skills. The more you will write simply, the better you will get. So that was all about today, viewers. I really hope you enjoyed this video and found it helpful and informative. Do let me know in the comment section what you made about today's lecture. Also like, share and subscribe my channel and press the bell icon to stay updated. आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, stay safe, stay blessed. अल्लाह हाफिज़।